Hello, good morning everyone. Welcome to Saurabh Sir classes. This is Chinu Thakur Jaiswal and we were discussing a paper. Okay. Already इसके सारे portions जो है upload हो रहे हैं. आप channel पर जाइए and you will get all the information related with these papers. I have already mentioned geography and history part. Okay, तो वो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा. Question number 3 A and B already uploaded. Now in this sessions we are doing question number 3 C and D part. इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट विद सौरभ सर क्लासेस तो दिस इज द नंबर. ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, सो वी आर रेडी फॉर हेल्प यू आउट. So let's start with question number C. What the question saying is, what are the factors influencing the declining trend in female workforce participants in participation in India? बेस्ट पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, ऑल क्वेश्चंस आर इंटरकनेक्टेड. उनके आंसर सम हाउ, जो भी पॉइंट्स हम लोग मेंशंस करते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट हो जाते हैं. बट द थिंग इज यू हैव टू राइट योर आंसर इन ओन वे. तो वो अलग अलग पैटर्न होना चाहिए, अलग अलग तरीके होने चाहिए, बट बुलेट्स जो हैं वो तो सेम ही रहेंगे. सो आई एम गिविंग यू द ट्रिक हाउ यू कैन राइट योर आंसर इन अ राइट वे. और 200 वर्ड्स बोला गया है तो इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है. यू हैव टू राइट द फैक्ट्स ओनली. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट योर आंसर इन अ राइट वे. दिस क्वेश्चन इज रियली स्ट्रेंज. ये यहाँ पर मतलब एकदम कंफ्यूज करने वाली बात है कि वी आर seeing many reels, many views, many pictures where woman power is showing, where the women are working and their compatibility where the person, the men are really very nice. But यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन पूछा गया है क्या डिफरेंस आया है, फीमेल वर्कफोर्स कम हो गया है एंड द फैक्ट्स आर शोइंग द सेम थिंग. अगर मैं यहाँ आंसर में आपको ये जो ग्राफ दिखा रही हूँ, द ग्राफ इज रियली it's we have to thought about this, we have to think about that. It's a earlier thought that woman is not equal to the man, but still they really facing such issue. It's really bad for us as well. So what are the causes behind that? Low participation rate is the first and important cause. The employability gender gap stand at 50.9% and with only 19.2% of women in the labor force compared to 70.1% of man. So this pattern you have to write in your answer. You have to show some facts, some informations related to the answer. Then gender equality, this is the base point and this is the basic cause. And you have see this cause is everywhere. Gender equality, inequality, sorry. India ranked 135 out of 146 country in the world. इकोनॉमिक फॉरम जेंडर गैप रिपोर्ट 2022. ठीक है, क्या बोलते हैं, स्मॉलर नेबर्स कंट्री फॉर एग्जांपल श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, दे आर फेयर बेटर. देखो, एंड जेंडर इनक्वालिटीज एक्सीडिंग 5% persist in India along with China, Pakistan, Azerbaijan and Qatar. मतलब हम लोग कहाँ पर डेवलप कर रहे हैं वो आप इन आंकड़ों से देख ही सकते हैं. पैंडेमिक इम्पैक्ट, क्या किया था कोरोना पैंडेमिक इम्पैक्ट ने इस एरिया में. पैंडेमिक डिसप्रोपोर्शनेटली इफेक्टेड वुमेन, हाउ, लीडिंग टू सी सेशंस. कैसे हुआ, सेक्टर्स लाइक रिटेल, हॉस्पिटैलिटी वेयर वुमेन्स वर प्रिवेलेंट suffered significantly. As a result, progress toward gender parity stalled and even reversed. ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंजेस उसी समय आए हैं सबकी लाइफ में. नेक्स्ट पॉइंट यू कैन गिव entrepreneurship potential. Encouraging women's involvement in entrepreneurship could boost India. होना ही चाहिए because India GDP is $0.7 trillion by 2025. तो अगर ऐसे में वुमेन्स को इनकरेज किया जाता है कि आप बिजनेस कीजिए, आप इंटरप्रेनर बनिए, कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. बिकॉज वुमेन एंटरप्रेनर्स कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पायर टू जॉइन द वर्कफोर्स. ठीक है, तो इस तरफ काम करना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट यू कैन ऐड इन योर आंसर, अर्बन एंड रूरल चैलेंजेस. ये भी बहुत बड़ा कॉज आ जाता है. फैक्टर्स हिंडरिंग वुमेन फ्रॉम पेड वर्क एग्जिस्ट इन बोथ, रूरल में भी और अर्बन सेटिंग में भी डिफरेंशिएट दिया जाता है. एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, डिफरेंसेस इन वेजेस. डिफरेंसेस इन वेजेस, सैलरीज में भी जो है डिफरेंस देखने को मिलता है जो नहीं होना चाहिए. तो ये सारे पॉइंट्स यू कैन एंटर इन योर आंसर.
and this will be really a very effective answer as per the question. Okay, so let's move on the next question. I hope you understand this question. Yes, so next question saying what are the major objective of Ayushman Bharat National Health Protection Mission, which was launched in September 2018 by the Government of India. So let's see the answer. आयुष्मान भारत के बारे में पूछा जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा जा रहा है. तो बेसिकली यू हैव टू राइट अबाउट आयुष्मान भारत and why this launched, and you can write only objective. They are not asking about the detail, but they just want to know why and what are the causes behind Ayushman Bharat. Let's see the answer. आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत स्टार्ट हुआ था 2018 में. ओके, बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. So here we have to mention the objectives only. So Ayushman Bharat is a flagship healthcare initiative which is taken by Government of India, and the aim of that policy is to give a proper healthcare services and improving also. Okay, so what are the objectives? Universal health coverage, to provide accessible and affordable healthcare to the poor and vulnerable section of society, ensuring that no one is left behind. So this point you can write in your answer. And financial protection, how it can reduce the financial burden on families, and the high medical expenses are really, you know, give a very negative impression on a family which is middle class family or the poor family. So the financial protection is really important. And then health and wellness center, they have opened around 1,50,000 HWC, it means health and welfare center across the country. Then they provide comprehensive primary health care there, including maternal and child health also. PMJ, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, gives 5 lakhs per family per year for this benefit, okay, and cover approx 10 crore poor people. And that's really good. They covered almost all the families who or who needs the health and a good wellness in their family members. So ensure coverage for secondary and tertiary healthcare services. Then you can write about improving health infrastructures. It strengthens healthcare infrastructures by upgrading existing facilities and establishing new ones to ensure better services delivery. Then preventive and promotive healthcare is a good point in your answer, because focus on preventive healthcare through awareness, campaign, health education and early diagnosis to reduce the incidence of diseases. Because early diagnosis of disease is really beneficial for the people. And then access to quality healthcare. Now every person can get a opportunity to take good health insurance, good health benefits from a good centers. Okay, then strengthening health system, that automatically improve the overall health system, and it can implement better management practices also. So this way you can write your answer. In next class we'll do the next question. Okay, I hope you like the session. If you like the session, please comment, and do like the session also. If you need any kind of help, so I have mentioned the contact number and you can directly go to the website as well. Okay, bye bye, take care, we'll meet soon in our next class.